case, my lord, this is not a right time, my lord. Again, acknowledging to mention case, serial number 8, my lord, in this. क्या हो गया? 8 में लॉर्डशिप है कि इसमें जो है रेस्पोंडेंट जो मर गया है तो गलती से उसका पोता जो है रिसीव कर लिया तो यहाँ पर दिखला दिया कि डिलीवर्ड। तो हम अदर साइड से ये सलेश सिंह से परमिशन ले लिया तो चूंकि आज लिस्ट में था इसलिए फाइल नॉट टू खाली कर दीजिए सो दैट हम अभी तक तो पहुंचा ही नहीं है। इससे अपील भी नहीं किया है। कॉल आउट होने दीजिए ना। अभी तो फर्स्ट हाफ का डिक्टेशन ही पूरा नहीं। मैं कुछ पर्सनल डिफिकल्टी था इसीलिए पर्सनल डिफिकल्टी इसे नॉट टू खाली कर दीजिए या परमिशन दे तो हम फाइल कर देंगे। परमिशन का कोई जरूरत नहीं इसे नॉट टू वेरी इंपॉर्टेंट। From supplementary list possibility for item 3, second appeal file number 10492 of 2025. Lordship, the only surviving effect is that one of the pages of the certified copy is not legible. Certified copy is not legible. One of the page, internal page number 10 of the certified copy of the order passed in the original suit, Lordship. Internal page 10. Lordship, now the difficulty is that even if I apply it afresh, Lordship, the execution code is about to reach to its conclusion, Lordship. I just can't read this. ये कैसे है certified copy? Latest अभी correct. यहाँ पे कुछ हाथ से करेक्शन भी है। इसको तो लूप करना पड़ेगा ना, इसको बिना कैसे होगा? आपने क्या एग्जीक्यूशन पेज के लिए स्टे फाइल किया? Lordship, there is a prayer in this. प्रेयर किसमें? In the second appeal. सेकंड अपील में ऐसा प्रेयर नहीं होता है। यहाँ पे फाइल सेकंड एप्लीकेशन। I will file it, You Lordship. just can't make a prayer in this particular in this file. आप उसको रिमूव कर दीजिए। आपको आसान चीज बता रहे हैं। इसको जो है ना एक पेज का कोड नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट लेजिबल। आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। इसका प्रेस करते हैं। Lordship, it will take substantial time Why to. it will take time? Lordship, वहाँ lower court में Lordship, so it takes time to correct this, Lordship. To correct this. Yes. करेक्ट क्या करना है इसमें? Lordship, तो certificate. फोटोकॉपी में एरर हो गया। Lordship, बाकी सब पेजेस तो बिल्कुल लेजिबल है। वो फोटोकॉपी करने में कुछ एरर हो। I will apply it afresh, Lordship. The only thing is the next date in execution case is on 10th of December, Lordship. आपका ना तो कोई मेन पिटीशन में प्रेयर है, ना ही आपने कोई स्टे पिटीशन। I will file it, Lordship. तुम तो क्या ही बोले? फाइल ही नहीं किया। फाइल करते तो कोई करता है। स्टे कर देते। प्राइम फेसी या सेकंड अपील है ना, बिना एडमिट किए स्टे भी नहीं कर सकते। बस until next date के लिए अगर Lordship. कैसे? There is no provision. बिना एडमिट किए सेकंड अपील में स्टे नहीं। सुन के स्टे करिए। I will file one आइए. आइए लेकिन पहले टिकट रिमूव करिए। कितना टाइम आपको चाहिए? Lordship, क्या मैटर है? क्या मैटर? Lordship, we were the performer respondents in the original suit. In the original suit, Lordship, an ex parte decree was passed. After that, since we never received any The notice, suit was for what? suit for declaration of title, Lordship. टाइटल ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता तो हम सोचते कि क्या करना है। देखिए, फाइल नंबर ऐसे 10492/25। Learning counsel for the appellant pays for and is allowed time till आप जब तक का टाइम बोलेंगे ना। Lordship, 3 weeks. 3 weeks. Time till 6th of January to remove the surviving defect. After also liberty to file that IA. Liberty तो आपके पास है। You don't need an order for that. If the defects are removed within time, hold this case on 8th of January. And that will create it. नहीं प्रेम भी नहीं तो अपने तक पर इतने परेशान नहीं होता कि इसके लिए DT हो जाए। प्रेम भी नहीं है। नॉर्मली हम प्रेम भी करते हैं लेकिन आपकी अर्जेंसी को और आपके कंसर्न को देखते हुए हम प्रेम भी नहीं करते। Permission item 5.
WPS 1212 of 2015. इसी में टाइम आ गया क्या? नहीं हम नहीं मानते हैं आइटम 4 ये में टाइम ऑर्डर्स लेके लगा ये addition है। करेंगे भी सेम अच्छा ये रिमाइंड हो गया इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया काउंटर आ गया है सप्लीमेंट्री का रिजॉइंडर भी फाइल कर देंगे रीडिंग्स कंप्लीट है काउंटर में क्या है? काउंटर में ये लोग बोले हैं कि रंजय कुमार सिंह के बारे में सिर्फ बताया है कि वो नौकरी कर रहा है बस इतना ही है बस बस और कोई काउंटर नहीं? नहीं और ये जो लेटेस्ट ये लोग काउंटर फाइल किए हैं 3/12/2025 को सॉरी 28 को फाइल किया 28/11 को उसका पहला 8 रिलेवेंट है 8 में ही मेन क्रक्स है पूरा काउंटर Most of these stated that so far as matter of Ranjay Kumar Singh is concerned, he has been reinstated in service by order number so and so in compliance of order passed by this honorable court in LTA number so and so, thereby Miranda honorable division bench of court has been pleased to observe that. Now this Ranjay Kumar Singh, my case was exactly similar to this Ranjay Kumar Singh and others in WPS 4032. My leadership का ऑर्डर था कि वो सारे लोगों का बताने के लिए ये लोग रंजय सिंह का सिर्फ बताया हालांकि वो सारे जॉब में हैं हम रिजॉइंडर में फाइल कर दिए हैं रिजॉइंडर हम फाइल किए हैं उसमें हम एक लगाए हैं एनेक्चर 1 टू माई रिजॉइंडर में इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये एक और जो जय सिया राम सिंह जो है वो भी जॉब में ही है ये हैपेंस टू माई क्लाइंट उनका रिसेंटली यहाँ ऑर्डर हुआ है तो बाकी सारे लोग 12-14 लोग में सब लोग काम पे हैं बस हमको निकाल दिया गया और हमको जॉब में नहीं लिया गया एग्जैक्टली सिमिलर सब कुछ सर्कमस्टांस है एक लिस्ट ऑफ डेट्स भी बना है This is a case on merit. हाँ तो वो जॉब में है बस हम ये दिखा रहे हैं entirely different This order has been passed on merit. yes but regarding another aspect वो दूसरा ही केस है बस दिखा रहे हैं कि आदमी जॉब में है बस ये दिखाने के लिए हम लाए हैं मेरा केस उससे डिफरेंट है ये उस बैच केस में ये भी थे जय सिया राम सिंह 4032 देखा जाए मैंने My leadership services देखिए आपको जो जिनके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उनके हर एस्पेक्ट को आप कंपेयर करें हाँ हर एस्पेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं हम 4032 इसलिए तो दिखा रहे हैं वो रेट पिटीशन का है जिसको देख के लास्ट टाइम मैं लीडरशिप ये ऑर्डर की थी काउंटर फाइल करने के लिए स्पेसिफिकली कि मेरा केस रंजय कुमार सिंह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और बाकी लोग उस बैच केसेस के सारे लोग काम पे हैं कि नहीं इन लोगों ने फाइल किया कि हाँ रंजय सिंह काम कर रहे हैं अब वो 4032 जो है मेरा रेट पिटीशन Mrs. Lakshmi Murmu. Counsel for the petitioner is present. He has submitted that the pleadings are complete. He has also furnished a list of dates, which is kept on record. I will only appears on behalf of the state. In order to give a chance to the counsel for the state, the list of dates you have to follow. The matter is adjourned. ये assignment है. हाँ assignment. And is likely to be posted on 10 on 16 जनवरी दिसंबर में नहीं हो पाएगा बहुत सारे सीवी हैं सारा काम है और आपका केस इतना सीधा नहीं है नहीं मेरा तो पिछले हम दिखा रहे आपके अनुसार 403 सारे चीज को कंपेयर करना मेरा जो प्रीवियस राउंड ऑफ लिटिगेशन क्वेस्ट फॉर डिसमिसल में उसमें लिखा हुआ है कि मेरा केस रंजय सिंह के बराबर है इसलिए इसको क्वेस्ट करते हैं उनके कहने से
इस तरह हाईकोर्ट का ऑर्डर था मैम। हाईकोर्ट के ऑर्डर में वो तो इक्विवेलेंस पर चलता है, लेकिन जब उसमें प्रोसीडिंग की बात होती है हाँ, दोनों सेम सेट ऑफ चार्जेस के लिए 2 बार डिसमिसल हुआ है। एग्जैक्टली सेम चार्ज दिखा देंगे, दोनों में सेम चार्ज, सब कुछ सेम है। उन्नीस तारीख ठीक। 19 that a copy of this already communicated to the office of the Director General to the claims of the council for the state. अगली बार नहीं आएंगे तो उनके बिना भी सकते हैं। एक बार मौका हो गया मौका। From date is order Saturn 1 CMP 318 of 2007. अब इसमें क्या बचा है बताइए। इसमें view of the earlier order I have filed an IA 15942 for substituting all these parties, petitioner and opposite parties. हाँ, जो 717 में जिनका हुआ वो अपडेट है, अपडेट है, उनको ही हमको सब्मिट करना है। बाकी जितना आए हैं, आप 6 तो आए हैं, जरा 6 आए, एक आए नंबर 2109 जो है 2109 2007, ये डिले हुआ था 516 दिन इन फाइलिंग दी CMP। आप सब से बताना लेंगे। I will file On behalf of all. 3 to 38. 3 to 38. Yes, I am referring not from the order passed in CMP number 717. 3 to 38. OP number 3. 38. तो इसमें ऑपोजिट पार्टीज तो कम ही है। Yes. Therefore, 5 IA applications have been filed by petitioners for the purpose of substitution, and he has made a prayer, in the substitution petition that the party position may be held in the light of order passed in CMP number 717. That is my case. तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। But delay in all the CMPs there is delay. And उसके लिए भी हम जहाँ डिले हुआ है एक आय पिटिशन डाले हैं, जो 5-6 आए हैं उसमें जिसमें डिले हुआ है उसमें और एक लिमिटेशन पिटिशन भी है फॉर फाइलिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। एक है 1429 ऑफ 14, आय नंबर 1429। अगर सिलसिले में बताएंगे मैडम तो 2639 OP2 दिनेश झा के लिए है, 6507 OP सत्यनारायण झा के लिए है, और उन्हीं के लिए जो फाइल किया गया तो एक डिले कंडोनेशन पिटिशन हम किए हैं 142940। Now these IAs will not for in practice. Now a fresh IA has been filed for substitution of all the petitioners and all the defendants, just opposite parties. Litigation मार जहाँ का कहाँ है सब मर गए। हाँ, कोई बचा नहीं है। तो खोलते थोड़ा सा कौन सा जजमेंट लगाएंगे कि जब सब लोग मर गया तो केस चलते नहीं, उसके लिए नहीं, जो सब्स्टिट्यूट हो चुका वो इसमें जो फॉलोइंग केस बचेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद सब में सब्स्टिट्यूट। हाँ, वो उसी का एक लाइन है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, और पिटिशनर्स का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका क्या, उसका वकालतनामा कहाँ वो हम डाल चुके? हाँ, कहाँ डालें? 717 में, तो उसके इसमें भी इसमें कहाँ डालें? इसके पहले अलग एक आया था जो अलाउ हो चुका था पहले इन 318 में। अच्छा, वो हो चुका था। अच्छा, उसके बाद ये डिसमिस पड़ नहीं ये हमको नहीं समझ आ रहा। आप इसमें से सबका बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करना है, substitution of the substituting the petitioners and the opposite parties. तो petitioners का substitution इसमें हो चुका है। हाँ, बहुत लोगों का हुआ है,
उनका वकालतनामा हम 717 में डाले हैं, जिनका ये हो 717 में डाले हैं। तो इसका क्या करें? इसमें जो जब हम उसमें डाले एक में वकालतनामा डाल दी तो सारा केस सुप्रीम कोर्ट तक डाल दिए वकालतनामा। नहीं नीचे के फिर क्या? जो रेस्टोर हो रहा है उसके लिए भी वो माना जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका अच्छा, इसमें आपका पिटिशनर्स का सबका वकालतनामा किसमें डालेंगे आप? Not in CMP number 717 of 2019 and not in this CMP. इसका वकालतनामा आपको अब क्या परेशानी है? वकालतनामा डाल दीजिए ना। हाँ, पिटिशनर की तरफ से ना, हाँ। जो पिटिशनर की तरफ से मारे हैं, अगर हमारा 318 में नहीं है तो उसको हम डाल 318 में। हाँ, ये जो प्रेजेंट आप तो बोले हैं कि सबको डिलीट करना है, सबका सब्स्टिट्यूशन है, ऑल द पिटिशनर्स। नहीं, जो सब्स्टिट्यूट हो चुका है। आप ये क्या फाइल किए थे? पढ़िए जरा आइए का। In the matter of substituting the petitioners and opposite parties. हाँ, क्योंकि 717 में भी दो एक पिटिशनर का डेथ हुआ था 717 के टाइम में। ये 717 का जरा वो खोलिए, कॉस्ट है। इंस्ट्रूमेंट तो आप सुन नहीं सकते हैं। वो जो 717 पे है, वो उसमें जितने पार्टी आए हैं सब अभी एलाइव है। सब इसलिए उसको अगर मेरे तरफ से भी है, पिटिशनर की तरफ से भी है या रेस्पोंडेंट की। एक बात बताइए, आपके पिटिशन में 31 पिटिशनर्स हैं, ठीक है? और इसमें कितने हो गए? इसमें 29 हो गए। हाँ, राइट? हाँ। तो आप टैली करिए ना, किसका किसका वकालतनामा पुराने ऐसे में नहीं है तो वो बताएंगे ना। इसका अगर नहीं है तो हम उसको देते। अगर नहीं है, हम ये अगर मगर का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? क्योंकि 717 में सबका हम दिए, उससे कोई मतलब नहीं। 717 का कहानी खत्म हो, ठीक है? अब इसमें जो सेकेंड अपील में अगर आपका कोई वकालतनामा पड़ा हुआ है तो आपको दोबारा नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि सीएमपी में वकालतनामा दोबारा नहीं डालते एज पर द प्रोसीजर। लेकिन जिसका सेकेंड अपील में वकालतनामा नहीं है उसका वकालतनामा तो आपको डालना पड़ेगा। तो सेकेंड अपील में जिनका वकालतनामा नहीं है उनका हम डालेंगे, उनको डालेंगे। हम ये करके वेरीफाई आप बताइए ना किसका किसका नहीं है, वेरीफाई करके बताइए किसका किसका वकालतनामा नहीं है सेकेंड अपील में। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सेकेंड अपील का तो सब था। हाँ, सब था। During आप बताइए ना pendency- इसमें एडिशनल किसका वकालतनामा डालना है? तो इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि थोड़ा सा देखना था। देखिए अभी देखिए भैया, इसके पहले नहीं, कोई क्या- और मर जाए, हमको मरने का बहुत चिंता है। ये आपका सीएनटी 2000 कौन सा 2018 का है ना, 2007 का 2007 बहुत मुश्किल है। आप इसको देखिए, चेक करिए, रिकॉर्ड है यहाँ पर। आप हम बता दे रहे कैसे चेक करना। सेकेंड अपील की कॉस्ट टाइटल लीजिए, ठीक है? और इसका जो सीएनपी है इसका पूरा कॉस्ट टाइटल ले लीजिए। और जिसका जिसका वक्त जो नहीं मरा है वो आप मार्क कर लीजिए, ये लोग तो नहीं मरे। और उसमें से जो मर गए हैं, जिनका सब्स्टिट्यूशन हो गया है, उनका नोट करके बता दीजिए, हम ऑर्डर में लिखा देंगे कि इन लोगों का वकालतनामा आपको फाइल करना, ठीक है? और हाँ, इसमें एक चीज हमको थोड़ा सा सबमिशन था इसी लाइन में, ये वकालतनामा के बारे में। खैर अभी जो नया है उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं पड़ेगा ना, ठीक है? अब इसको देख तो हम ग्रांट करें नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि थोड़ा पूरा फाइल अब देख लीजिए, आप पूरा चेक कर लीजिए किसका किसका वकालतनामा आपको डालना है। हाँ। चेक कर, पुराना केस है हाँ। इसको अब हम 2000 अब क्या बताएंगे, 2026 पहुंच ही जाएगा इसका तो कोई उपाय नहीं अभी है। एक सीएमपी इनका और बाकी है। अभी इसके बाद भी एक सीएमपी बाकी है, Registration is CMP. 38 38 of 2005. उसी 2005 का भी सीएमपी बाकी है। ये इसको second. चलिए next।
Request of the council for the argument for petitioner for this case on the next day. सीरियल सप्लीमेंट्री में सीरियल नंबर 5 Item 2, second appeal 41 of 2022. क्या सीरियल नंबर 5 का सप्लीमेंट्री में मार्क नहीं हो पाया इसलिए फिर हम कुछ आपके एडवर्स तो नहीं किए हजूर ये बोलना चाह रहे थे कि इसको कल रख दिया तो हम असिस्ट कर देते इनका ही तो नहीं कोई एडवर्स ऑर्डर हो तो सर कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं हम खाली बोले हैं कि आप एब्सेंट हैं एजी से आपको बोले हैं कि आपको हाजिर किया हजूर कल कोई हम भी एडवर्स ऑर्डर नहीं हजूर इसको कल के लिए रख दिया जाए जब भी तो हम असिस्ट कर दें मार्क नहीं हो पाया अब एक डेट दे दिए हैं 19 तारीख का है उतना दीजिएगा आपने नोट्स बना के हम कर रहे हैं नोट्स तो नहीं बनाए नहीं नहीं बना के हम कॉलम डाल दें तो इसमें रिस्पॉन्डर नंबर 8 का डेथ हो गया मंडे को आइए फाइल कर देंगे कब डेट हुआ 2025 में हुआ है। अरे कोई दिन तारीख मुहूर्त कुछ है हाँ डिटेल आ गया कब है बताइए कब डेट हुआ फाइल कर देंगे ऐसे नंबर 41 ऑफ 22 24/3/2025 24 24/3/2025 The learned council for Jharkhand has submitted that respond number 8 has expired on 24/3/2025. Apparently, the proceeding is abated in connection with respond number 8. However, he seeks adjournment. Who's the next file? Item 3, second appeal 103 of 2024. Defendant secondly, common provision of orders. There are two ideas. One is for limitation. There is delay of 770 days. This is for IEA of the second Second, limitation. limitation. Notice was issued on limitation. We have appeared, Your Lordship. We were the original plaintiff, we have appeared. We will define it. क्या बोलना है आपको? All the respondents have appeared. Only one party. Only one plaintiff is there. क्या बोलना है आपको limitation? Okay. I'll oppose the application for condonation of delay, but Your Lordship, one more thing I'll point out. That same matter Your Lordship has already dismissed. That means the origin, where the original title, the suit arose of one hukumnama related to one portion of the same That is title. not made. It has, yes, but it has been dismissed by Your Lordship on merit. Here I'll oppose because Your Lordship, I'll say that 770 days, they are not entitled to, it is not reasonable delay, and they have not been able to explain the delay. Okay. This is one judgment we will check out. So you judgment. Similar things. Yes. Which paragraph? Paragraph 35.2 says that the expression sufficient cause is elastic enough for courts to do substantial justice. Further, when substantial justice and technical considerations are pitted against one another,
the former, in my case, the applicant has got a very good case in which he raised on merits safety. Is it a title suit? Title. 20 brought title suit on the basis of one's deed of 2012 and from whom she purchased, land was settled to her in the year 1942, and that was it is a forest land. We gave right to forest land. The party says it is there. It was brought for declaration of title. देखिए IA number 8451/24. This petition has been filed for condemnation of delay of 770 days in preparing this appeal. The learned counsel for the applicant has submitted that the matter relates to forest land, and the suit was filed seeking declaration of title. Yes. Which was initially, it was dismissed, but Which was dismissed by the trial court, and the judgment was reversed by the learned first appellate court. The learned counsel has referred to paragraph 4 to 10 of the petition for condemnation of delay, and has submitted that delay is bona fide, and the reason for delay is bona fide, and the delay will continue. He has relied upon the judgment passed by the Supreme Court report 2023, that it closed 10 SCC 531, paragraph 35.2, to submit that it has been held that the expression sufficient cause is elastic enough for courts to do substantial justice. Further, when substantial justice and technical considerations are pitted against each other, the former would prevail. The learned counsel for the respondents has opposed the prayer for condemnation of delay and has submitted that delay has not been properly explained. After hearing the learned counsel. and one more. Your Lordship, because regularly this is coming up. Now there have been situations where there is even 1 day delay or 10 days delay or very minimum amount of delay. Then also because I'll say that, Your Lordship, because Order 41 Rule 3A says that whenever there is a delay, then Your Lordship has to, the Honorable Court has to issue notice. I say that if the main matter does not have merit, then the Honorable Court is not required to issue notice, and the main matter itself can be Yesterday I was thinking on this, that there is no point that in all second appeals notice should be issued on the point of limit. Although my view is minority view, but I'll only argue. I'll not say that whether Your Lordship accepts or not. Your Lordship may see Order 43 or 41. No, we are only on the limitation. We will hear the case on merits. But there are cases where similar. Yes, I have to do something about it, because mechanically, when the notices are issued, we find that later on it comes that most of the people have died. At the time of issuance notice, nobody discloses anything, and then the cases remain pending for 10 years, 20 years on the point of substitution, and in the meantime, the litigants, they keep on dying. Yesterday I was asking Mr. Sharma also that is it necessary? And in my another case, 100 respondents, Yes. delay of only 30 Yes, that days. case, I don't know what happened. Have I heard it? Your Lordship, it has fixed, and it is Not nothing. being taken up. It would again take. No, we will not do this. So my submission would be. That is substitution, and these miscellaneous petitions are the main reasons for pendency over here. People are dying one after another. One permission I would like to say one thing, that if suppose, my lord, there is some appeal is barred by limitation, then my lord,
there is no occasion to hear on the merits also. That's right. We'll see that. We have to find out methods by which the cases can be expeditiously taken up. Yes. The question of issuance of notice arises only if there is some merit in the matter. Merely because there is a delay of 2 days, the matter will not remain pending for 20 years. Isn't it? Merely because there is a delay of 2 days, the matter will not remain pending for 20 years. Before this court. But my opinion, Your Lordship, my humble submission, I would say that, my lord, if the appeal is time barred. So therefore, in then one the case you law have to test it before the Supreme Court. If the law One case you have to test it before the Supreme Court, and if the Honorable Supreme Court say that even 1 day's delay cannot be condoned without, and the court cannot look into the merits in the second appeal, then I will change my mind. But I am really at complete loss. Your Lordship, there are two ways to look at it. Now, let us assume a matter which is within period of limitation and it is heard and absolutely no merit, it is dismissed. But merely because there is a 2 days delay, the Honorable Court is the Honorable Court bound to issue notice to the respondent and ignoring the merit And with all responsibility at my end, I find that second appeals are filed with very minimal delay of 10 days, 15 days delay. It will be fine. And there is a purpose behind it. And 3A subclause 2 says, if the court sees no reason to reject the application, that means my submission would be the reason to reject the application can also be merit of the matter. No, that will be the limitation petition. That is not Just tell us one thing. Before the Honorable Supreme Court, we find so many orders. Delay condoned SMP dismissed. Delay condoned without issuing notice. Right? Don't we see those orders? I am seeing. Then? But the same thing is happening even before the Honorable Supreme Court when the matters are taken up on the point of delay. There is some 1 or 2 submissions on the point of merit also. But delay is condoned without issuing notice. The Lord may also condone the delay and can hear the matter on merits. No. But if there is a delay in an appeal, how it can be without? You see, if I find that there is no merit in the matter, I will condone the delay and dismiss the appeal. But there would be one difficulty. There is no difficulty. Suppose some We person will figure it out. We have to figure out something that there are no cases pending where the suit is instituted in 1959. No, if suppose your Lordship dismisses an appeal and if some persons are dead persons, then it would be a nullity in law. We'll see that. We will not assume that anybody is dead. When the party is filing a petition, making them a party in the proceedings, the court will not assume that somebody is dead. We will not assume. Whatever is there in the decree, we will assume that he is alive. Yes. And there is no question of any assumption that somebody is dead. But the story of death comes before this court in the second appeal that he died sometimes in 1970. So every time the plaintiff cannot be blamed. And because suppose I am not blaming anybody. This is the reason for pendency of second appeals. Yes. First appeals, of course, you have to take care. Not second appeals. If suppose the other side, if suppose there is a decree in his favor, and suppose appeal is being made before this court, if he did not took right steps, you see, in appropriate case, the litigant has a remedy. They can file a review petition over here, they can file a recall petition over here, they can do many things. Right? In medicine and in advocacy, there is one major difference. Medicine does not know review. एक बार ऑपरेशन हो गया तो खत्म कहानी. लेकिन litigation में ऐसा नहीं होता. Litigation में तो इतने सारे remedies हैं ना कि nobody will be rendered remedies ever. Remedies are there. I agree. But still, I would like to examine It is always to have two sides of two views on two different views on the same. But if the law says that if the application has to be dismissed, the appeal will automatically be dismissed. We will see that. There is no need to see the merits. That's what I. एक तो order करने दीजिए ना गलत ही सही.
लेकिन for the interest of justice and for the system, I think that is one way of looking at it. Before people die, and then there is some अभी एक वो restoration में everybody has died. Plaintiff भी पूरे मर गए, defendant भी पूरे मर गए, case जिंदा. तो रहेगा. The counsel for the respondents has opposed the prayer and has submitted that no sufficient reason has been assigned for condonation or delay. And delay is enormous. Yes. After hearing the learned counsel for the parties and considering the facts and circumstances of this case and the nature of litigation involved, this court is inclined to condone the delay in filing this appeal after being satisfied with the cause shown and also for the interest of justice. Accordingly, IA number 8451 of 24 seeking condonation of delay is hereby allowed subject to payment of cost of rupees 20,000 to be deposited to be responding on this. This must be paid to the Yes, certainly. Respondent Certainly. Manorma Devi. To the Original respondent number 1. Up to the detailed bank account. हाँ, The details of the bank account of the respondent number 1 be furnished by the petitioner, by the counsel for the petitioner to the counsel for the state. The supplementary affidavit regarding transfer of account money to the account of the respondent number 1 should be filed by 16th. Okay. There is one more item for stay of execution. I'll pray that it may be hard next week itself. हम तो Why to? कोई बात ही नहीं है अगर आप कल पैसे जमा करिए परसों आपका मेरिट पे सुन लेते This is the judgment on passed by your lordship. I'll be relying upon. हैं Same. फाइनल हो गया हाँ, तो इसमें इसके बारे में ये पता करेंगे because state itself had filed an appeal which was dismissed by your lordship. In this case, there was concurrent finding which was under challenge. In our case, only reversal is there, but basic story is absolutely same. oh this Raja Bahadur Kamakina Same. And same hukumanama is in question here. कब करना है बताइए 16 तारीख तक आप जमा करा दीजिए failing which means appeal will stand dismissed without prejudice to them. Post on 17. If this order is supplied, post on 17. This was our Item 4, CMP 186 of 2024. Lord, we have filed IA number 11149 of 2024 and 13199 2024 for setting aside abatement, condonation of delay and subsequently for substitution. The matter was heard on 29th August and wherein Lordship has been pleased to issue notices. And the same matter was again heard on 28/11/2025, wherein it has been queried that party number 27, 4 and 31C, 31-1 appears to be same. Is it correct? It is such that 31-1, that is Soni Devi, is wife of respondent number 31 itself. And as far as 27 is concerned, 27-4, she is granddaughter-in-law of. They are two different persons. No, Lordship, they are same. They both are same. Raju Rajak and Milord may come to IA
IA number 11149. Yes. Relevant para would be para 6. Yes, para 6. Leadership 6-4 is Soni Devi. That is granddaughter-in-law of respondent number 27. That is Khadiya Devi. That same Soni Devi appears in para 7-1. Yes. That is Soni Devi. Leadership, the Kailash Rajak, he is the husband of Soni Devi, and Kailash Rajak himself is a party, respondent number 31, and therefore he has been substituted by Soni Devi. And in place of respondent number 27, that is Khagya Devi, Soni Devi is his great granddaughter. Therefore, he has again been placed in as in a different party. capacities she is part. Ha, exactly. In different capacities. Ha, exactly. So what do you want to say? Either this may club, let's say, inspect. The notice has been served? Leadership notices have been served. There are 4 respondents who haven't been filed their wakalatnama, and all of them, rest of them have already filed their 73, 74, 81 and 31. 31. And 27-4 has filed. 27-4. 31-1 and 27-4 they have filed. There is only one wakalatnama which has been received. Okay. Soni Devi has filed only one wakalat. Only one wakalatnama. So we can ignore 31-1. As whatever leadership says. Yes. What about 73, 74 and 81? They have not filed wakalatnama. OP number 81 has been served to his wife. Ha. Served And to brother-in-law. Leadership. OP number 73 and 74 has been referred to mother. We'll accept the notice. We'll accept the notice. There is one OP number 40 and 41. They were not found. And 41 were not found. We have to verify it from 47 and 40 and 41 has not found. Were not found. Because CNP number 186 of 2024. The learned counsel for the petitioner has submitted that OP number 27 within bracket Roman 4 and 31 within bracket Roman 1 are one and the same person, namely Soni Devi, who is wife of Kailash Rajak, within bracket OP number 31, and is also granddaughter of respondent number 27. Respondent number 27. He submits that she is to be substituted in 2 distinct capacities in the present case. He has further submitted that Wakalatnama has been filed on behalf of the opposite parties to whom the notice were issued on
on earlier occasions. Date भी नहीं लिखते। The notice were issued upon the legal years of OP number 2, 7, 8, 21, 27 and 31. All of them have appeared except opposite party number 7 within bracket Roman 3, 7 within bracket Roman 4, 8 within bracket 1 and 31 within bracket 1. He says that 31 1 is same as 27.4 and therefore the notice may be accepted as served upon respondent number 31.1 as well. So far as respondent number 7.3, 7.4 and 8.1 are concerned, they have been served either They have been served through their close relative. He submits that the notice be accepted as validly served. Considering their quoted submissions, the notice upon the proposed legal years and successors of OP number 2, 7, 8, 21, 27 and 31 is accepted as valid. The records further reveal that notice upon 47 and 49 has been served to husband and daughter-in-law respectively. The learned counsel submits that the notice be accepted as validly served. Considering the submissions, the notice upon this OP number 47 and 49 is also accepted as validly served. The notice upon opposite party number 40 and 41 has remained unserved as they were not found. Counsel for the petitioner praised for and is granted 3 weeks time to take appropriate steps for service of notice upon OP number 40 and 41 at their present and correct address or to take appropriate steps regarding substituted service of notice. These people are not appearing. Nobody is appearing on behalf of the respondents. Post on present and corrected address will go through. Notice on present and corrected address will go through studios. 10 की जगह 70 channels. You have two options. Either you file your requisites at present and corrected address with 40 and 41, 40 and 41, or you can file a substituted petition, substituted service of notice to newspapers by saying that you have not been able to trace out where they are, since they have not been found. Item 5, Council Bill 31 of 2025. IE has been filed for coordination of delay of 26 days. First appeal. Yes. Who are you? Respondent? Responding number Notice were issued upon them? Yes. So, Sir. ID number 2285/25. This petition has been filed for condemnation of delay of 226 days in filing this second appeal. Which paragraph? Paragraph, you notice it. Paragraph 5, 6,
The learned counsel for the applicant has referred to paragraph 5, 6, 7. 5 to 8 of the interlocutory application. Any objection? The learned counsel for the respondent says no objection so far as prayer for combination of delay is concerned. After hearing the counsel for the parties and being satisfied with the caution, the IA number 2285 of 25 in combination of delay is hereby allowed. How many respondents are there? You have access for all? The telling on behalf of the 4, 5, 6. 4, 5, And 6. and 6. They are the pro forma did. I am for 1, 2, 3. 1, 2, 3 are the contesting. Yes. Admit कर लेते हैं. FA में दिखेगा. नंबर है ना FA का ही नंबर है कि फाइलिंग नंबर? Filing number. FA number 31. Admit. Call for records from the concerned. Received it. फिर क्या है? फिर आपको admit नहीं हुआ ना? Admit लिखिएगा. The records have already been received from the concerned court. आप क्या करना है? तो बस बताइए क्या है? Sale deed. You are challenging the sale deed. Yes. On what ground? हियरिंग के पॉइंट पे प्रिपेयर नहीं हो. अरे भी कुछ तो बताइए ना उसी हिसाब से डेट फिक्स करें. बताइए क्या ग्राउंड पर आप चैलेंज? Ground is already ये है. 3 grounds are there. The person who has executed the sale deed, he was not in a condition to execute the deed. He was suffering Unsolved from. mind. No, he was suffering from cancer and he was not in a condition to execute the deed. Secondly, all the money has been transferred in the account of some other person. Third thing, the suit valuation has not been shown correctly. There are other grounds also. ऐसा कोई लॉ है क्या कि कंसिडरेशन जो ओनर है उसी के अकाउंट में रहना? वो नहीं है. But to show that how this transaction has been done, fraudulent means for that purpose I have submitted that. And only one of them is agreed by this plaintiff number 1. One is the wife of the original plaintiff or plaintiff, and 4 and 5 are the son, and 6 is the firm of the respondent number, additional number 1. कब करेंगे बताइए? बहुत टेक्निकल केस. कितने एविडेंस हैं? विटनेस? How many witnesses are there? How many witnesses are there? कब करना है बताइए? न्यू ईयर में लगा दी. कौन सा साल? जनवरी जैसे खुलता है वैसे. जनवरी तो हर साल आता है. नहीं इसी कौन सा साल है? नहीं इसी 26. कब करना है आपको? Yes, respondent. When you want to do it? Any date. They have suffered the eviction order also. कहाँ है वाला आप? तो बता दीजिए ना, दोनों साथ में लग जाएगा. Eviction. उसी घर के ऊपर. उसी घर के eviction के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील प्रिपेयर. कौन डिसाइड किया? हम किया. No, your lordship will not decided. Notices have been issued in that. Notice has been. हम लोग अपील कर गए. तो eviction on tenancy. दूसरा सूट क्या था? टेनेंसी का था. वो निकल नहीं रहे थे ना घर से बाहर, तो उसका वो उसके भी लिए अलग से सूट फाइल कर दिया. क्या
इविक्शन के लिए क्या करते नहीं मतलब आपका तो ड्यूटी हो गया ना आपके फेवर में। अच्छा उसके लिए इविक्ट करने के लिए अलग से इविक्ट करने के लिए सब पैसा लेके सारा एग्रीमेंट करके सब चीज करके और फिर उसका फर्स्ट अपील का नंबर बताएं। 32 और 2025 32 और 2025 दोनों साथ में रहता तो दोनों सेम ही 2025 इसका स्टेटस बताइए। रिकॉर्ड तो अलग होगा सबका, अलग है। FA 32 और 25 बताइए। The suit property is the same. चलिए ladies it is coming on से टैग कर दिया जाएगा जैसे whatever your lordships 15 December. Counsel for the parties have submitted that arising out of the same suit premises and between the same parties, another title suit has been decided, which is subject matter of first appeal 32 of 2025, and the scheduled date of listing of first appeal 32 of 2025 is on 15th of December. The councils have submitted that the present case be tagged along with the सुनने के अलग ही अलग जैसा साथ नहीं सुनवाई जैसा जैसा ठीक है लेकिन टैग कर दे। जैसा जैसा whatever your lordships Let this matter be heard along with first appeal number 32 of 20. Be tagged with first appeal number 32 of 2025 and be posted on 15th. your lordship जनवरी के फर्स्ट उस दिन नहीं सुनेंगे, थोड़ा समझिए। बोल दिया हम तो बोल दिया बिल्कुल भी जैसा फर्स्ट अपील ऐसे थोड़ी डिसाइड हो। एक दिन तो हमको समझने में लगता है कि कहानी क्या है। फर्स्ट अपील फाइल की तो बड़ी अच्छी बात है। स्माइल भी बहुत बढ़िया अपीयरेंस अपीयरेंस ये सब केस में एक भी स्टोरी समझने में लगता है, दूसरा दिन सही। लेडीशिप का स्माइल मिल गया इससे बड़ा बहुत बड़ी चीज है। Item 6, second appeal 42 of 2025. ये क्या है? इसमें जो लिमिटेशन है नोटिस कर सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंडीशन में पेंडिंग है नोटिस जाएगा कोई डिलीशन वगैरह भी है यदि सब्स्टिट्यूशन है सर है तो सब्स्टिट्यूशन पहले नोटिस जाएगा उसके बाद ही ना नहीं वो नोटिस तो सब्स्टिट्यूशन में तो किसने किया है? नहीं सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन में मैसेज सब्स्टिट्यूशन में भी तो जाएगा। लिमिटेशन में गया लिमिटेशन में क्या हुआ उसके बाद सब्स्टिट्यूशन फाइल कर दिया। लेकिन इसमें यही तो है कहानी। बहुत कहानी है आपको सब पता है। इसमें एक्चुअल में सब पार्टी अपेयर हो गया और कुछ लोग इसमें डेथ कर गए जैसे तो 7 पहले 11 जब का हम तक डिलीशन सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहते होगा तब तक हैं 7 और 11 का जिसका हम इसका डिलीशन चाहते हैं और 6, 10 और 12 का इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा जी डेट ऑफ डेथ तो इसका पूरा पहले का ही इसलिए हमको भी ले नोटिस कर दिया जाए फिर हम भी मीन टाइम थोड़ा इंस्ट्रक्शन इसमें ले एक लेते हैं तो प्रॉब्लम और भी है इसमें हमको एक तो दूसरा पिटीशन भी फाइल करना होगा इनका पिटीशन प्रॉपर नहीं है इसमें एक लिमिटेशन पिटीशन भी इसमें नहीं फाइल नहीं है। नहीं हम देख रहे हैं कि इसमें अबेटमेंट के सैटिस्फाइड करने के लिए कहे हैं और एक तो इसमें इनका ये कहा हुआ है कि कंडोल करने का नहीं दिया तो वो कंट्रोल करने का इसलिए नहीं दिया क्योंकि डेट ऑफ डेथ ही नहीं। डेट ऑफ डेथ तो है मतलब नहीं कहाँ? ईयर ऑफ डेथ Where have you mentioned? Oh, 2011. ये 2011 में लिख रहे हैं 12 में लिख रहे हैं 2012. 12 में Impute judgment कब का है? इंप्यून जजमेंट तो ये 2016. 24 का है तो 60-50 वो अपील वाला है मेरा 17 में अपील डिसाइड हुआ 24 में अपील डिसाइड हुआ और सूट है 2008 तो ये लोग तो अपील में भी नहीं सब्स्टिट्यूट अपील ये प्लेंटिफ ये नहीं प्लेंटिफ हमने तो प्लेंटिफ का प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया फिर अपील किया इन्होंने खुद
हम लोग इसमें से जो मेन कंटेस्टेंट है वो अपीयर मेन कंटेस्टेंट एक ही ना एक ही है, है, बाकी तो appear आप ही कर- लोग हैं सर, जो बाकी डेट तो हुआ सब है। परफॉर्मा। नहीं सर, 4 ही परफॉर्म है, आप देखिए। नहीं सर, काइंडली देखिए सर, देखिए सर, देखिए एक बार देख लीजिए मेमो को। यही कहानी के कारण जो है देखिए। ना, यही स्टोरी के नहीं कारण। देखिए 2011 में मर गए कितने साल लेकिन हो गए? सची रानी केवल एक प्लेंटिव थी, 1 to 19 कंटेस्टिंग डिफेंडेंट थे। बट लेकिन अगर प्लेंटिफ का सूट अगर मान लीजिए जो इसमें 2000 कब डिसाइड हुआ, 17 में डिसाइड हुआ, तो प्लेंटिफ सब्स्टिट्यूट अरे करेगा। तो आप ही के परिवार के ना है सर, सब एक खानदान के हैं, अलग कैसे बात है। तो आप जब तक नहीं लाइएगा कि हमारा भाई, हम तो डॉक्टर हैं, हम आप नहीं लाइएगा। अब आप सब कैसे बोले, बात सीखते सीखे हैं, ये भी नहीं बोल सकते हैं, गलती हो गया। इसलिए सर लिबर्टी मांग रहे हैं कि फिर पिटीशन फाइल करें। प्रॉपर पिटीशन इस पॉइंट में हम दे दिया जाए दाखिल सर। करना हाँ, होगा, प्रॉपरली फाइल पिटीशन नहीं। तो जहाँ तक कि डिलीशन का बात है, वो वाला पिटीशन हजूर इलाव किया जा सकता है। और ये जजमेंट ऑफ रिवर्सल है, इसमें पॉइंट ऑफ लॉ यही है। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि 2011 में जो मर गया उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो पॉइंट है। मोहन अहिर के जजमेंट में हजूर का जजमेंट आया है, हम इसमें देखें कि मोहन अहिर का जजमेंट है। माइलॉट ने उसमें हमने देखा, आज ही देखा, तो मोहन अहिर का एक केस है, उसमें हजूर ने ये पॉइंट डिसाइड किया कि किशुन एलियस राम किशुन वाला जो एक लॉ है कि इट इज अ नलिटी इफ समबडी हैज डेड, कोई डिग्री है उसके खिलाफ, तो वो सब सारा पॉइंट ऑफ लॉ को कंसीडर करते हुए आपने हजूर ने डिसाइड किया है, आपने डिसाइड किया कि अगर वो केस अगर अगर रिकॉर्ड पर उनके वारिसान हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, तो वैसा केसेस में बता दीजिए ना मोहन अलीम का जजमेंट है। किस नंबर बताइए, हमको थोड़ी याद है किस में क्या डिसाइड किया। तो वाला आए हैं, लेकिन फाइल सर को टाइम भी दिया जाए फ्रेश पिटीशन फाइल करना। हाँ, वो तो फ्रेश नहीं, इसमें तो उनको एक और आइए फाइल करना हाँ, है, इसीलिए बोल रहे हैं कि दे दिए सर। एक का डेट ऑफ डेथ नहीं, 12 का है, 10 का है, लेकिन 6 का डेट ऑफ डेथ अच्छा 16 है। हाँ ठीक है, लेकिन आई नंबर 1102/25 has been filed for substitution of respondent number 6, 10 and 12 who have died, who are said to have expired in the year 2016, 2012 and 2011 respectively. का भी है, डेट नहीं है, ईयर 2016. The learned counsel for the appellant submits that a petition for condonation of delay is required to be filed. He has further submitted that before the first appellate court, the plaintiff was the appellant and no steps were taken at the first appellate, at the stage of first appeal. To this, the counsel for the respondent plaintiff has submitted that no information was furnished before the court about the death of their own family member. The respondent number 6, 10 and 12, who along with other contesting defendants belong to the same family. Okay? सेम नहीं है, बट फैमिली ट्री में यहाँ तो लोग पड़ोसी को परिवार मानते हैं, मानते हैं भाई, हम अपने भाई बंधु को परिवार नहीं मानते। क्या बात बताइए? जब सर को बताइए क्या करते हैं? तो इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। परमानेंट छुट्टी तो भी हो रहा है, जनवरी में रखेगा। हाँ। ये वाला एक दूसरा आइए डिलीशन के लिए उसको इलाज किया जा सकता है। आइए लाइए डिलीशन अलाउ करना, इससे भी आपको नहीं, आपको ऑब्जेक्शन नहीं, एक ही साथ कर दीजिएगा, हम भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, एक ही साथ सब क्या हो जाएगा उसे डिलीशन कर देते हैं। कर दीजिए। कौन सा सब्जेक्ट आइए नंबर 11025, आइए नंबर 11025,
24 है 2-4 तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। 25 Deletion of 7 and 11. IA number 11025 has been filed for deletion of respond number 7 and 11 who are said to have expired 11 in the year, 7 in the year 2018. Para 7 in the year 2018 and 11 in the year 2020. 11 in the year 2024 by stating that both of them they died issueless. Other legal years are on record. लीगल रिप्रेजेंटेटिव में तो आई जाएगा, अगर फैमिली ट्री है ना तो डिवॉल्व करेगा, इसलिए इसमें से डिलीशन चाहते हैं तो होने दीजिए। क्या अगर हम गलत नहीं डिलीशन तो डिलीशन कर दीजिए। The learned counsel for the appellant has submitted that the names of the respond number 7 and 11 be deleted. Subject to any objection. नहीं, subject to your own risk. Considering the aforesaid submission, the name of respond number 7 and 11 is permitted to be deleted at the risk of the appellant. Yes. The counsel for the appellant is directed to carry out necessary correction in the cost of ready during the course of the ये issueless death हमको समझ में नहीं हो सकता। Yes, that's why I बहुत सीरियस चीज है कि भाई क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 के पास है या सरकार के पास है। सर खुद आर्गू करते हैं नहीं तो आप सरकार को पार्टी बना दीजिए, डाइड इशूलेस सरकार को पार्टी बना दीजिए, डाइड इशूलेस सरकार भी बेनिफिटेड अगर आप जीत गए तो। बाकी लोग हैं भैया लोग चला जाएगा। गलत है इसीलिए ना माय लॉर्ड वही गलत है कि नहीं? एकदम गलत। भाई अगर कोई उसका लीगल हेयर नहीं है तो उसका शेयर उसका प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? और रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं जाएगा तो सरकार के पास। हाँ, स्ट्रीट प्रोसीडिंग चलेगा ना, स्ट्रीट प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगा। वैसा जब प्रोसीडिंग चलेगा तो हाँ मतलब माय लॉर्ड का वही करना है तो ठीक तो बोलो। तो फिर सरकार has right to defend its own rights. I agree. एक केस में सर यही बताया। कोई केस यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। Greatly. Item 7 first appeal 130 of 2025. नोटिस इसमें हुआ था लिमिटेशन मैटर में कोई एनकेज है किसी I appear for Advocate Siddharth Jain, who has received instructions for respondent number 1. What about others? Respondent number 2 and 3 are sisters who are married and live in Madhya Pradesh. Notice has been served. It has been served in respondent number 1's address. Son, you did the present and correct address. I provide this. I got the address. Item delivered लिखा हुआ है तो इनके जाए। It has to all the reported that all the notices of Close relative को तो हो ही गया ना? Are you in conflict with each other? No, I do not have the. I provide the address if that is, Even or for maybe the- some time can be given so that time I इनको दे दिया so जाए। that I can get the because the address is of Madhya Pradesh. FA number 130 or 2015. How much is the delay? 43 number days. 43 days. 4731 has been filed seeking confirmation of delay of 43 days in filing the present first appeal. The office note reveals that as per speed post tracking, the notice has been delivered to N.K. Jain, the Mr. So and so, N.K. Jain. Who is N.K. Jain? N.K. Jain नहीं पता वाला। इनका नाम लिखिए। He submits that Advocate Siddharth Jain has received instructions on behalf of respondent number 1 and he shall file wakalatnama shortly. He has further submitted that
the respondent number 2 and 3 are also close family member of respondent number 1, he shall seek instructions and file wakalatnama on their behalf. Okay? I will post on 9th of January. In the meantime, the wakalatnama can file. आइए नहीं अभी अलाउ Item 8, CMP 921 of सेकंड अपील का जो 1025. जजमेंट है जो 304/2019 304/2009 मोहन अहिर वर्सेस मुन्नी देवी 2009 2019 29/1/2025 का जजमेंट, इसमें वो रामकृष्ण एलियास रामकृष्ण वाला भी जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का, अलावा 2023 का एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट हुजूर ने इसको कंसिडर किया है। और वो लोग भी खोज रहता है, उनको नहीं मिला। नहीं, वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हम खोज रहे थे, उनको नहीं मिला। मेरा सिस्टम थोड़ा वीक हो गया है। आज इसको देखे जाए, it is a very considered judgment on this point. ऐसे नंबर 304 of 2019 आप नहीं है इसमें? No, I was looking for it, हम अपने पॉइंट के लिए हम देखे थे। ऐसे नंबर 304 of 2019 का ये जजमेंट का सॉफ्ट कॉपी है, करेंगे इसको सब। 22/25. उसमें जो मेन जजमेंट रिलायड अपॉन है, इसमें दो ऑर्डर हैं, उसमें पहले फाइनल जजमेंट है ये। हाँ फाइनल जजमेंट 304/2019 सेकंड अपील। इसमें जो जजमेंट इसमें हुजूर ने इसमें रिलाई किया है वो 2023 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 261 का है, शिवा शंकर एंड अनदर वर्सेज HP वेदास्याचार। मिल जाएगा, मिला है। ठीक, हमको याद है कि हम एक डिसाइड किए थे, एक दिन ऐसे सब्स्टिट्यूशन के लिए खोज रहे तो मिला नहीं हमको। एक कोऑर्डिनेट बेंच ने भी हमारे एक दूसरे केस में भी डिसाइड किया है, वो वाला, लेकिन उसमें IM ने ही डिसाइड किया। लेकिन ये जजमेंट बहुत कंसीडर्ड जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का सारा जजमेंट इसमें आपने जो हम तो अपने रिसर्च करके हमको जो मिलता है हम डाल भी देते हैं। Item 8, CMP 921 of 2025. Madam, in this notice were issued, main respondent is died by law और गलती से पोता जो है रिसीव कर लिया, यहाँ पर दिखला दिया कि डिलीवर्ड है, और ऑलरेडी जो रिस्पोंडेंट है CMP number 921 of 25, Mr. S.K. Chaturvedi, Dr. S.K. Advocate submits that the sole respondent has expired. died। कोई डेट पता है? हाँ डेट है, हम दे रहे हैं 1/5 को, Died on 1/5/2019 1/5/2019. फाइल एफिडेविट में रिगार्ड Yes. तो कॉपी And काउंट he files an affidavit to that effect before this court. डेट इसमें detail दिए हैं, जी detail है, sir. डेट सर्टिफिकेट भी लगा दिया लॉर्ड He से। has submitted that the death certificate हाँ लगा हुआ है लॉर्ड से। has been enclosed हाँ इनका बेटा जो है, दूसरा बेटा जो है वो उनका आधार कार्ड है। and the name of legal heirs has been mentioned in paragraph 2 of the integrity application. We have filed affidavit on C, किसका वकालतनामा इसमें डालें? वकील महता C, ABC जो है। He has, along with this interlocutory application, wakalatnama of younger son of younger son of deceased respondent जी has been annexed. my lord। बाकी सबकी तरफ से भी कर देंगे। पहले इनको सब्स्टिट्यूशन फाइल करेंगे। जी जी पहले इसे Counsel for the appealant seeking credit. इसमें ना आइए इंस्टीट्यूट करना है और आइए क्लोज करना है। जी लॉर्ड। This is an information regarding that. कब रखना बताइए? Post on 9th of January. Item 9, CMP 1108 of 2025.
in addition, this CMP has been filed for restoring the FA number 128 of 2023 to its original file, as the same was dismissed on 16/8/2024 for non-compliance of preemptory order dated 4/7/2024 passed by Honorable Mr. Justice Subhash Sharma. And in IA petition number 3177 of CMP 2025. number 1108 of 2025 with IA number 3177 of 2025. 3177 of 2022, seeking condonation of delay Of 114 days duration. of 114 days. Let notice be issued to the respondents in IA number 3177 of 2025 as well as in CAP number 1108 of 2025, for which requisites under speed post be filed. Within 2 weeks from today, right? If this order is complied, office to tax speed post immediately. If this order is complied, close this case on 9th of January. For admission item 10, first appeal 120 of 2011. इसमें फाइल में फाइल के हैं appellant and respondent both that, and so we have to know party in CMP 85 of 2014 they are party. I have filed the online order of this court. This on the court that is in page 9 and 10. So in this appeal there should be party in this appeal. And they are required to be substituted. आइए का पेज 9 10 में हम दे दिए, दोनों का नाम अपीयर हो रहा है। IA number 15543 of 25 in first appeal number 120 of 2011. This petition has been filed for substitution of appellant, sole appellant, and also respond number 1, who have expired on 15/6/2024 and 25/1/2024 respectively. The name of legal heirs of the appellant has been mentioned in paragraph 4 within bracket Roman 1, and that of respond number 1 has been mentioned in paragraph 4 within bracket Roman 2. Let notice be issued to the proposed legal heirs and successors of appellant as well as respond number 1. appellant तो आप वकालतनामा फाइल कर दिए हैं? नहीं, वकालतनामा ऑलरेडी फाइल। कहाँ पर? क्यों फाइल कर पहले से किया हुआ 2011 का सूट है, फाइल किए थे फिर उसी इसमें फाइल। नहीं अभी इनका फाइल किए थे ये जॉय लूकस CMP 85 85 से नहीं चलेगा, यहाँ तो फ्रेश वकालतनामा फाइल करना। I will file again. Let notice be issued to the proposed legal heirs and successors of respond number 1, whose details have been mentioned in paragraph 4 within bracket Roman 2 of this interlocutory application. Counsel for the appellant undertakes to file wakalatnama on behalf of the legal heir of the appellant. Within a week? Within a week. Notice आप कर दीजिए, please speed post. जनवरी में दिया जाए। क्या जनवरी में? डेट। किस चीज़ के लिए डेट? वकालतनामा दे। उनका तो आप रिक्विजिट तो फाइल कर देंगे 2 हफ्ता में। हाँ, रिक्विजिट फाइल कर देंगे स्पीड पोस्ट, ठीक है? पोस्ट और 9 है। Item 11, civil review 40 of 1022.
He left for the court for some emergency. This civil review was dismissed. Then it has been restored. This is arising out of Yesterday, a senior outcome has filed a Halakrama. Shows on e-court and tomorrow just pass on to the day. It is civil review of which order? Civil review 40 of 2022. It is review of which order? Your name please? नाम बताइए. Zishan Khan. नाम करें. Civil review number 40 of 2022. The legal counsel for the finance is attending. Post on 20th of March 26. Just a week. आपके अनुसार देखूंगा. आपने कोई एडवांस नोटिस भी नहीं सकती. Item 12. Contempt Civil 266 of 2023. This order has not been complied. Payment has not been. Ranchi University department. दोनों जने बोलते हैं ना तो दोनों की बात सुनाएंगे. आपको अप्लाई करना है ना. आप Payments have to be made by Ranchi University. This court has already passed an order. We have given all details to Ranchi University because this relates to a period of 10 years before Jharkhand University. Your Lordship, we are taking steps. We are seeing into the calculations, what payments are to be made. Your Lordship, how much time do you need to calculate to request report? 3 weeks maybe. 3 weeks, so there request report. Content Civil 266 of 2020. The counsel for the opposing party submits that the matter be adjourned for 3 weeks, and in the meantime, necessary payment will be made in the account of the petitioner. Post on 9. Compliance report be filed by 7. Item 13. Contempt Civil 573 of 2023 along with item 14. Last week the matter was taken up and for reference from the original writ documents, both the matters have been tagged. Lordship, the writ was for the questioning of an order which has been passed under Public Land Encroachment Act, dated 26/4/2023. Yes, sir. This is sorry, 22/4/2023. 22/4/2023 order of demolition. Yes, sir. When did you file the writ? Lordship, the writ was filed on 8/5/2023. When was the interim order passed? Lordship, the interim order was passed on 18/7/2023. Lordship, there is a background for why this particular order was passed. Lordship, may I just place it? I'm taking the dates. Just The moment we filed a writ application, there was a defect which was pointed out that a certified copy of the order of demolition has to be filed.
we filed one supplementary affidavit saying that we have already applied for, but due to some reasons, for the reasons best known to the respondents, the same is not being given to us. For the time being, the defect was ignored and the matter proceeded. And your ladyship was pleased to ask for the entire call records so that the entire documents can be seen by your ladyship. The time was granted. The next date on which it was fixed, the records could not have been brought up. The respondents again sought time on the pretext that since the Shravani Mela is going on, it is very difficult for them to procure the documents and produce before the court. Considering this plea, the interim order dated 18/7/2023 was passed, in which a clear specific direction was there that no coercive action has to be taken against the petitioner. Your ladyship may just refer to the order dated 18/7/2023 for instance. On 18/7/2023, this interim order was passed. And on 20th/7/2023, the demolition was done. Despite When did you communicate this order? And how did you communicate this? Lordship, it's annexure 2 in the contempt itself. A letter was given to him in which there is a receiving of 18/7 itself. The moment interim order was passed in the favor, page 15. And he did it? इस निवेदन के साथ कहना है कि मैं रविंद्र कुमार सुवंशु विक्रम हरिदासी डे पिटिशनर के स्थान है का दुकान संख्या 528 के स्थित है, उस दुकान को हटाने का आदेश आपने कार्यालय द्वारा दिया गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में सुवंशु रिट संख्या आज है। आज दिनांक 18/7 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे स्टे कर दिया गया है। This was communicated the moment the order was passed. It was communicated to the petitioner. The petitioner on the same very day communicated to the respondents. On 20th, the demolition was done. And on 25th July 2023, we filed a contempt application. Now, your ladyship, two different dates are important from now. On 10/8/2023, a counter affidavit has been filed in the writ application. In the entire counter affidavit, the respondents have defended the order which was impugned on the ground that an opportunity was accorded, there was encroachment which has been demolished. Nowhere they say that the structure has already been demolished. This fact has not been brought by the respondents on 10/8/2023. The very next day, they file a show cause in the contempt 11/8/2023, in which they make a statement that in the month of May itself, the petitioner has herself demolished the structure and has complied to the order. Again, on 13/2/2025, after passage of almost 2 years, a supplementary counter affidavit is filed by the respondents in the present writ application, stating therein that the structure was demolished by the petitioner even prior to filing of the just after filing of the writ application. The writ was filed on 8/5, and on 15/5 itself, she herself has demolished it. Henceforth, the entire writ petition and contempt proceeding arising thereafter pursuant to the interim order is vexatious. This is the ground which we have taken. Now, your lordship may kindly. This plea regarding violation of interim order and the consequence of violation of interim order is essentially subject matter of the contempt. Yes, your lordship. Now, so far as the writ petition is concerned, what is there on this? Lordship, just refer to the writ application. So we will see the procedure. Is it an appealable order? Yes. Yes, your lordship, it's an appealable order. If it is an appealable order, you always SDM. Because you see, that was at that point of time there was some urgency. The records were not available. You were not getting the certified copy, yes, your lordship, etc. So at that point of time, the writ was entered in. But these are the facts which has to be known to be
You appeal your remedy. But so far as interim order is concerned, you will take care of it. Indeed, Your Lordship. I am not contesting that. There are only few things which I'll just like to bring to your Ladyship's notice. And if Your Ladyship decides that the appeal would be the appropriate way, then the same can be granted. The statutory provision of Section 5, it mandates certain things. The matter was remanded back to by this Honorable High Court. A coordinate bench remanded the matter back to the authority to give appropriate opportunity to both the parties and then decide the matter. So the matter went there. We filed an application. There was dispute with respect to 2 different plots. We produced documents. We did everything. Fine. The order can go against us, it can go in my favor. That is not disputable. Now the issue is that any quasi-judicial order must exhibit application of judicial mind. It may be applicable. With your documents, what was your plea after? Where is the order of the court? Annexure 2, Your Ladyship. It's already Page- 4:30 now. We shall write, we will continue tomorrow. Your Lordship, Tomorrow is the working day. yes, Your Lordship. Subject to Your Ladyship's convenience, I am ready. कल एक DBP है। Tuesday रख दिया Yes, Your Lordship. थोड़ा सुन लिया, थोड़ा लिस्ट में देख लेना। Indeed, वो हम दे देंगे next week. थोड़ा ये सीक्वेंस थोड़ा सा। Indeed, Your Lordship, I'll give. The problem with आप ऐसे क्यों करते हैं? Yes, Your Lordship. इस तरह से कैसे डिमोलिश करते हैं? स्ट्रक्चर जो था वो 4 मैं बता इट वाज 4 तंबू था। जी, एक 4 बांस पे वो तिरपाल है। ठीक है, तंबू 525 पे इनका दुकान है। तंबू था। 525 पे दुकान है। करते क्या है कि हर साल जब मेला आता है तो वो तिरपाल लगा के चूड़ी वहाँ बेचते हैं। जब ये ऑर्डर हुआ हुजूर तो वो तिरपाल खोल ली और फिर लगा ली। ऑर्डर हुआ तो तिरपाल खोल ली। हाँ, ये जो ऑर्डर पास हुआ हटाने का तो वो तिरपाल खोल ली पिटिशन। 525 पे इनका अपना दुकान है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। 524 को इंक्रोच करती हैं वो। 524 किसका प्रॉपर्टी? 524 पब्लिक प्रॉपर्टी गरीब मिस्टर गैंजा खत्याल में गरिया रिकॉर्डेड है। वो बास्कीनाथ टेम्पल के जाने के रास्ते में वो है और दोनों साइड से बहुत लोग लगाते हैं, तिरपाल लगा के अपना चूड़ी वगैरह बेचते हैं। मुझसे भी आपको परेशानी? नहीं, बाकी पूरे देवघर का सारा एनफोर्समेंट हटा दी। जो इसमें हम है जानना चाहते हैं, बाकी सब पूरा एनफोर्समेंट सब जगह का हटा दी। मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है उसको। कोई भी इंस्ट्रक्शन तो कहाँ से आएगा? जब यहाँ एक इंटरिम ऑर्डर हो गया और यहाँ ये पहले वो तिरपाल हटा ली। तिरपाल तो रोज ही हटता होगा ना? वही इंक्रोचमेंट। तिरपाल तो रोज ही हटता होगा, रोज रात को तिरपाल समेट के जाता होगा बंदा। वही इंक्रोचमेंट। हाँ तो क्या इससे क्या साबित करना? तो वो जब एक बार कंप्लाई कर ली तो रिट इन्फ्रक्चर्स हो गया। The first counter affidavit Once she removed it, the only thing that was part of the encroachment was that tirpal. Once she removed it, the order that she is challenging here, she complied herself. Then the writ became infructuous. That is my humble solution. This particular And your dispute- lordship, may I point out, indicate one thing. जब आपने फर्स्ट काउंटर एफिडेविट फाइल किया तो क्यों नहीं बोला कि दिस केस हैज बिकम इनफ्रक्चुअस, दे हैव ऑलरेडी रिमूव्ड द एनफोर्समेंट? That Who is stopped you from saying so? And in the content you say another story. So why did you say that the petition has become infructuous? Because they have already revoked the enforcement. Supplementary वो line 2025 में supplementary और फर्स्ट काउंटर का फाइल किया 11/8/2023 11/8/23. That is the first counter, Yes, your lordship. right? Yes, your lordship. Second case infructuous. Okay. Principal, just one thing. There is no involvement with respect to उनके writ में. They have not stated anything like that. What will they state? उस समय तक demolish नहीं हुआ था. It's How will I a say? They are seeking stay, no? What will they state? What will they state? So we have given a parawise reply to their
did. Okay. It is only by the vice chair. Yes, Your Ladyship. Since 2009, Your Lordship, they are pursuing this. जीवित है ना आपके पास नहीं आ रहे हैं But सामान. they have suppressed material facts, Your Lordship. What material facts? If Your Lordship has the order passed in 2022, if Your Lordship has the second para. Just a moment. Yes. We do it on Tuesday. Yes. Yes, Your Ladyship. इसमें The matter has remained inconclusive. This case for further hearing on Tuesday. 2:15 first case. Yes. और तो कोई मैटर नहीं रखना है एक ट्यूसडे की तरह बैठे. इसमें अपील के प्रोविजन में एक टेक्निकल है डिफिकल्टी, Your Ladyship. इसमें आफ्टर डेमोलिशन वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन IA फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्रेयर सीकिंग कंपनसेशन एंड दैट हैज बीन अलाउड. Now the prayer of compensation is also there. So if I withdraw and go before the appellate authority, that compensatory relief I will have to waive off. वो एक technical issue, वो IA allow हो चुका है. Now that is a part of this writ application now.